Now move to the uploading and downloading. What is uploading? अगर हम uploading की बात करें कि we want to publish something and the people and the other peoples are able to access that thing on their devices, तो किस तरह हम किसी चीज को पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बनाएं, ठीक है? So for what we have to do, firstly we have to send that text, information or something made available to the web server. तो सबसे पहले हमें वो चीज वेब सर्वर तक भेजनी होगी and save it there so that whenever the other people is connecting to that web server, it is available to all. तो जब भी हम अपने डिवाइस से कोई भी इंफॉर्मेशन वेब सर्वर पर भेजते हैं, वहां उसको सेव करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज अपलोडिंग. मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ठीक है? तो whenever we are doing something new, we want that the people come to know about it. What we do, we just upload it onto our account, onto our social networking account. Okay, and when we upload it, it is available to all the persons who are connected to our social networking account. तो क्या किया हमने कि जो एक इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारे डिवाइस में थी, उसको हमने वेब सर्वर पर वहां पर सेव कर दिया, और जब भी कोई भी पर्सन उस इंटरनेट के थ्रू उस वेब सर्वर से कनेक्ट हुआ, वो इंफॉर्मेशन वहां उसको अवेलेबल हो गई, ठीक है? तो दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड सेविंग अ फाइल और डॉक्यूमेंट or any other information from your device to the web server is uploading. सुनना आया कि हम अपने डिवाइस से कोई भी इंफॉर्मेशन जब वेब सर्वर पर भेजते हैं, वहां उसको सेव करते हैं, इट इज नोन एज अपलोडिंग, ठीक है? एंड द अपोजिट ऑफ दैट इज डाउनलोडिंग. और इसका अगर हम उल्टा करते हैं कि कोई चीज वेब सर्वर से लेकर के हम उसको अपने डिवाइस पर सेव कर रहे हैं, ओके, देन इट इज नोन एज डाउनलोडिंग. सो रिट्रीविंग और एंड सेविंग और मेकिंग अ कॉपी ऑफ वेब पेज, फाइल और एनी अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्वर टू आवर ओन डिवाइस, इट इज नोन एज डाउनलोडिंग. वी ऑल नो इट वेरी वेल कि डाउनलोडिंग क्या होता है, ओके? कि वेब सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने डिवाइस पे रिट्रीव करना और उसको वहां पर सेव कर लेना, इट इज नोन एज डाउनलोडिंग. तो दीज आर द टू टर्म्स, इनको ध्यान रखिए, याद रखिए. आगे बात इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट वी कम टू ईमेल. ईमेल मैंने अभी आपको बताया द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेब सर्विस that is used by a lot of people, or you can say every person who is accessing the internet and working in any of the MNC is using the email. Or most of us, जितने भी हम लोग हैं who are using the smartphones, all are having their email address, because if we don't have any email address, we are not able to access the Play Store. ठीक है? जब भी आप प्ले स्टोर को एक्सेस करना चाहते हैं, यू हैव परचेज्ड अ न्यू डिवाइस एंड यू वांट टू एक्सेस द प्ले स्टोर, फर्स्टली व्हाट इट नीड्स योर ईमेल अकाउंट, ठीक है? तो जब भी हम प्ले स्टोर को एक्सेस करना चाहते हैं, वो सबसे पहले हमसे हमारा ईमेल एड्रेस मांगता है, ठीक है? और आफ्टर दैट वी आर एबल टू एक्सेस द प्ले स्टोर एंड द अदर सर्विसेज that are available on Play Store. So email is the widely used tool on the internet. Email stands for electronic mail. So email stands for electronic mail. It is the most widely used tool to send the messages electronically on a network with the help of the computers and other smart devices. Okay? तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन
सेंड करनी है, रिसीव या कहीं दूसरे किसी पर्सन को सेंड करनी है, जो भी है उसमें इंफॉर्मेशन को, इट मीन्स हमें we have to send the information from one person to another person. That there we use emails. Okay, मैंने आपको बताया कि वहाँ कोई जनरल एक नॉर्मल पेपर्स का यूज ना करके हम वहां पर ईमेल्स का यूज देखते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज ईमेल मैसेजेस आर जनरली सेंड एंड रिसीव्ड by the mail servers. Here it is also written down. Emails are generally sent and received by the mail servers. तो mail server यहाँ पर क्या है? It's a such type of dedicated computers who are responsible for sending and receiving the mails. कि मेल को भेजना है, मेल को रिसीव करना है, तो the servers that are responsible for sending and receiving the mails are the mail servers. ठीक है. इसके बारे में हम आगे देखेंगे अभी क्या होते हैं ये. तो पहले आप ये जानिए कि मेल सर्वर एक्चुअल में क्या कर रहे हैं. तो मेल सर्वर्स आर द डेडिकेटेड कंप्यूटर्स who are responsible for sending and receiving the mails. Okay, to send the email and to receiving the mails, there is the main function of the mail servers to do that process. Next is कि emails के advantages क्या हैं. अगर हम इस बात को कहते हैं कि it is a most widely used service, most widely used tool of the web services, why it is mostly used? क्यों इतना यूज किया जा रहा है? Because it has some advantages. इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं. That's why it is mostly used, widely used. Every person, every organization is using this service. So what are the advantages of this email? So one by one we discuss about it. The very first thing is low cost. Every person who is doing any type of work, firstly he thinks about the cost, कि cost कम आनी चाहिए, काम सब हो जाना चाहिए, and the cost should be minimum, and email completes this requirement. आपको सिर्फ नेट सर्विसेज को एक्सेस करना है और आप ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट. सो फर्स्ट इज लो कॉस्ट. ओके. नेक्स्ट इज स्पीड. In the past times, the peoples write the letters. Okay, hard copy of the letters, write them, post them, and after 2 or 3 days, it reaches to their destination, received by the person to whom it was sent. Okay, तो वहाँ क्या है कि टाइम कंज्यूम हो रहा है बहुत ज़्यादा. But with the emails, you can just write the mail and click. In a few seconds, your email is sent to the person whom you are sending it, and it is received quickly by that person. तो आपने email लिखा और एक क्लिक किया, send, और quickly आपका मेल पहुंच गया. तो second thing is speed. Third, waste reduction. We most of time talk about save earth, plant trees. ठीक है. And we all know very well the papers are made from the trees. After cutting down a lot of trees, then the papers are made. अब आप देखिए कि with the help of the emails we are not using the papers. All the work is done digitally. ठीक है. It means we are reducing the waste of the papers as well as we are saving the earth, isn't it? Okay. Next is easy of use. The person who have the general knowledge
how to use the computer, how to use the internet, can easily access the emails. There is no any such type of lump sum training required to accessing the internet, to accessing the email. If you have general knowledge about how to access the computer system, the internet, you can easily access the emails. Okay. Next is record maintenance. It means sometimes you just send a letter to someone and he just denied that he didn't get any letter that is sent from you. तो आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे? If you send him a hard copy, आप कोई हर बार एक कार्बन कॉपी तो लिखेंगे नहीं कि एक पहले भेजने के लिए लिखा और एक रिकॉर्ड मेंटेन के लिए लिखा. Or in the same way, if you have to send a letter to 5 persons, then you can write down it 5 times. Okay. Want to send it to the 10 persons. Okay, you can write to the 10 times that letter. But if there is a chance that you have to send the same letter to 100 of people, then what will you do? Will you write it 100 times? No. It's a very tiresome job. So that time we just write the letter one time and send it to 100 people. The copy of the letter sent to that 100 people, and we also have the record that we have sent this letter to these persons. तो हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि हमने ये लेटर यहाँ इन लोगों को भेजा है. तो these are some advantages of the email. That's why it is using widely by all the peoples all over the world. Everything, if it has advantages, there are some disadvantages also. कि अगर किसी की कुछ advantages हैं तो उसके कुछ disadvantages भी होते हैं. There is pros and cons of everything, and the email also have some disadvantages. First is the hardware requirement. If you don't have any device, any computer, then can't use email. आप email जैसी चीज को नहीं एक्सेस कर सकते. अगर आपके पास कोई डिवाइस नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कुछ नहीं है, then you are not able to access it. Second is ST medium, और कैन से कि पहले आप इंटरनेट डिवाइसेस को कलेक्ट करें, डिवाइसेस को अरेंज करें, देन इंटरनेट को अरेंज एक्सेस करें, उसके बाद ईमेल अकाउंट बनाएं, वो सब करें. इफ अ पर्सन थिंक्स दैट कि ये तो बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स है, दैट पर्सन कैन नॉट यूज द ईमेल. तो वो पर्सन बहुत ज्यादा impatience हो जाएगा. Second thing is, and the third thing is, hard to convey the emotions. जैसा कि आप लोग चैटिंग में करते हैं कि स्माइलीज भेज देते हैं, बट आप यहाँ पर वो स्माइलीज या इस टाइप के इमोशंस, इमोटिकन्स जिसको आप कहते हैं, वो नहीं आप यहाँ पर भेजते हैं. आप फाइल्स अटैच कर सकते हैं, बहुत सारी फाइल्स. इट्स एडवांटेज, बिग एडवांटेज ऑफ द ईमेल. बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ facial expressions. You cannot send the emoticons. Okay, and these are some disadvantages of email. और sometimes ऐसा होता है कि हमें इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि आपने कोई मेल भेजा. इट इज नॉट necessary that the person whom you send the email
क्विकली रीड अबाउट इट, रीड दैट मेल। जरूरी नहीं है कि वो तुरंत उसको पढ़ ले। तो यू नीड द पेशेंस फॉर इट्स रिप्लाई, कि whenever the person, the receiver, read that mail, then after he will reply you. It's not possible you will get simultaneous reply. आपको तुरंत क्विक रिप्लाई मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा नहीं हो पाएगा। ओके, तो these are some pros and cons, advantages and disadvantages of email. Okay, in next we will discuss about the email account, email address. Okay, how we access our email account, how to write a new mail, what are the tabs that are available in our email account, what the other things that we can do in our email, what is the syntax or the format of an email address, all the other things related to the email and other things we will discuss in next class. Okay, आप बुक में जो ये टॉपिक्स आपको मैंने डिस्कस किए हैं उनको एक बार पढ़िए, and if you have any doubt then you can send your queries. Okay.